Hello everyone, welcome back to our channel Science Site. Today we will discuss important questions from sexual reproduction in flowering plant. So let's start. So the first question is, the distal end of the filament is attached to the filament की जो distal end होती है वो किससे attached होती है? Filament is a stalk of a stamen. It has two ends, distal end and proximal end. So the distal end of the filament is attached to the option A thalamus, option B petal, option C anther, option D both E and B. So the correct answer is option C anther. Now let's move on to question number 2. So the second question is, functional megaspore in an angiosperms develop into an. फंक्शनल मेगास्पोर ओव्यूल में जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके बनाते हैं, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाती हैं और एक मेगास्पोर फंक्शनल होती है और ये फर्दर डेवलप होकर के फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है. सो नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन. ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन सी एम्ब्रियो, ऑप्शन डी ओव्यूल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एम्ब्रियो सैक. फीमेल गैमेटोफाइट को ही एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. So the question number 3 is, attractants and rewards are required for. attractants और rewards किस में required होते हैं? तो sometimes plants को pollination के लिए pollinating agents की नीड होती है, जिसमें मोस्ट कॉमनली इंसेक्ट्स होते हैं. इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. अट्रैक्टेंट्स लाइक फ्रेग्रेंस, कलर्स एंड रिवॉर्ड्स लाइक नेक्टर. सो नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन. ऑप्शन ए एंटोमोफिली, ऑप्शन बी हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी क्लिस्टोगैमी, ऑप्शन डी एनिमोफिली. So these all are types of pollinations. इंटोमोफिली में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, हाइड्रोफिली में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होती है, एनिमोफिली में एयर के थ्रू, एंड क्लिस्टोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंटोमोफिली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. The question number 4 is, flowers which have single ovule in the ovary and are packed into an inflorescence are usually pollinated by. It means flowers जिसमें एक सिंगल ओव्यूल होती है ओवरी में और बहुत सारी फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेंस में एक साथ पैक्ड होते हैं, वो यूजुअली किसके थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी बैट, ऑप्शन डी वाटर. So the correct answer is option B wind. इस टाइप के फ्लावर्स लार्ज क्वांटिटी में पोलन का प्रोडक्शन करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय. डबल फर्टिलाइजेशन किस में एग्जिबिटेड होती है? ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म. So the correct answer is option C angiosperms. एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में एक स्पर्म एग से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और एक पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होकर के पेंटोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. So the question number 6 is, pollination in water hyacinth and water lily is brought about by the agency of. वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है? ऑप्शन ई वाटर, ऑप्शन बी इंसेक्ट और विंड, ऑप्शन सी बर्ड्स, ऑप्शन डी बैट्स. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्टार मार्क क्वेश्चन. वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज अ एक्वेटिक प्लांट, बट इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंसेक्ट और विंड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. So the question number 7 is,
The ovule of an angiosperm is technically equivalent to. एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल होते हैं वो टेक्निकली किसके इक्विवेलेंट है? ऑप्शन ए मेगास्पोरेंजियम, ऑप्शन बी मेगास्पोरोफिल, ऑप्शन सी मेगास्पोर मदर सेल, ऑप्शन डी मेगास्पोर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मेगास्पोरेंजियम, बिकॉज इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. So the question number 8 is, the coconut water from tender coconut represent. टेंडर कोकोनट में जो कोकोनट वाटर होती है वो किसे रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, ऑप्शन बी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी एंडोकार्प, ऑप्शन डी फ्लेसी मेसोकार्प. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. So the question number 9 is, seed formation without fertilization in flowering plants involves the process of. बिना फर्टिलाइजेशन के फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी एपोमिक्सिस, ऑप्शन सी स्पोरुलेशन, ऑप्शन डी बर्डिंग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एपोमिक्सिस. Apomixis is the process of formation of seed without fertilization in flowering plants. Now let's move on to question number 10. So the question number 10 is, proximal end of the filament of stamen is attached to the. हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही देखी थी. Filament is the stalk of a stamen and it has two ends, proximal end and distal end. So the option A is placenta, option B is thalamus or petal, option C anther, option D connective. So the correct answer is option B thalamus or petal. Now let's move on to question number 11. Question number 11 is, filiform apparatus is characteristic feature of. filiform apparatus किसकी characteristic feature है? ऑप्शन ए एल्यूरोन सेल, ऑप्शन बी सिनर्जिट, ऑप्शन सी जनरेटिव सेल, ऑप्शन डी न्यूसेलर एम्ब्रियो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिनर्जिट. सिनर्जिट सेल्स में filiform apparatus होती हैं जो पोलन टिप को एग तक गाइड करती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. So question number 12 is, which of the following best defines sexual reproduction in flowering plants? फ्लोरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेस्ट डिफाइन कौन कर रहे हैं यहाँ पे? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव मीन्स, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ऑप्शन 3 अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग ओनली माइटोसिस, ऑप्शन 4 डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मीन्स ही होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 is, fertilization in flowering plants involves the fusion of which cells? फ्लोरिंग प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें किन सेल्स के बीच में फ्यूजन्स होते हैं? ऑप्शन 1 पोलिन ग्रेन एंड ओव्यूल, ऑप्शन 2 स्पर्म एंड एग सेल्स, ऑप्शन 3 पोलिन ट्यूब एंड ओव्यूल, ऑप्शन 4 ओव्यूल एंड सीड कोट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 स्पर्म एंड एग सेल्स. स्पर्म एंड एग सेल्स इज अ मेल and female gamete respectively. Now let's move on to question number 14. So question number 14 is, which of the following best describe the function of the style in flower? फ्लावर्स में स्टाइल के फंक्शन को इनमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? तो स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर्स.
Now check the option. Option 1, it produces pollen grain. Option 2, it serves as a pathway for the pollen tube to reach the ovary. Option 3, it develops into the fruit after fertilization. Option 4, it secretes nectar to attract pollinators. So the correct answer is option 2, it serves as a pathway for the pollen tube to reach the ovary. स्टाइल पोलन ट्यूब के लिए एक पाथवे का काम करता है ताकि पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच सके एंड उसके थ्रू स्पर्म्स भी आगे ट्रांसफर हो सके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. So the question number 15 is, which of the following statement about self incompatibility is incorrect? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग बतानी है हमें. सो द सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को समझें तो इसका मेनली मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना, अपने पोलन से फर्टिलाइजेशन नहीं होना ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सके. ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो इनब्रीडिंग को अवॉइड करने में हेल्प करती है. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन. ऑप्शन 1, self incompatibility prevents self fertilization and promotes cross pollination. Option 2, self incompatibility is a genetic mechanism to avoid inbreeding. Option 3, self incompatibility allows pollen from the same plant to fertilize its ovule. Option 4, self incompatibility is controlled by S gene. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है. ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो इनब्रीडिंग को अवॉइड करता है एंड इसमें जो पोलन होते हैं वो सेम प्लांट्स के ओव्यूल से फर्टिलाइज नहीं होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, इनकम्पैटिबिलिटी अलाउज पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट टू फर्टिलाइज इट्स ओव्यूल. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो एस जीन के थ्रू कंट्रोल की जाती है. ये हमें याद रखनी है. एनसीईआरटी में मेनली ये दी हुई नहीं है ये पॉइंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज, ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस हाउ मैनी मेगास्पोर्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मैनी यूजुअली सर्वाइव. मेगास्पोरोजेनेसिस में कितने मेगास्पोर्स बनते हैं एंड उसमें से कितने सर्वाइव करते हैं. सो द मेगास्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. इसमें मेनली 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल होती है. सो नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन. ऑप्शन 1, 4 प्रोड्यूस 1 सर्वाइव. ऑप्शन 2, 4 प्रोड्यूस 2 सर्वाइव. Option 3, 8 produced, 1 survive. Option 4, 8 produced, 4 survive. So the correct answer is option 1, 4 produced, 1 survive. 4 मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाती है, एक ही फंक्शनल होती है. Now let's move on to question number 17. So the question number 17 is, cleistogamy is best described as. क्लिस्टोगैमी इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें क्लोज्ड फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होती है. इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सपोज्ड नहीं होते हैं. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन. ऑप्शन 1, पॉलिनेशन बाय विंड. ऑप्शन 2, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स. ऑप्शन 3, सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन अनओपन क्लोज्ड फ्लावर. ऑप्शन 4, पॉलिनेशन मेडिएटेड बाय वाटर करंट. So the correct answer is option 3, self-pollination occurring in unopened closed flowers. Pollination by wind को एनीमोफिली बोलते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स को जीनोगैमी एंड पॉलिनेशन मेडिएटेड बाय वाटर करंट हाइड्रोफिली के थ्रू होती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 इज, which of the following statement about nectaries is correct? नेक्ट्रीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन 1, नेक्ट्रीज प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. ऑप्शन 2, नेक्ट्रीज सीक्रेट नेक्टर टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स. ऑप्शन 3, नेक्ट्रीज आर पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऑप्शन 4, नेक्ट्रीज डेवलप इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
2. Nectaries secrete nectar to attract pollinators. नेक्टर सिक्रीट करती है जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is, in the process of fertilization in flowering plants, the male gamete reaches the ovule via. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें मेल गैमेट ओव्यूल तक कैसे पहुंचते हैं? ऑप्शन 1 पोलन ट्यूब, ऑप्शन 2 स्टाइल, ऑप्शन 3 सेपल, ऑप्शन 4 पेटल. So the correct answer is option 1 pollen tube. So the question number 20 is, flowers adapted for wind pollination typically exhibited which of the following characteristic? फ्लावर्स जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं वो टिपिकली कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को अडेप्ट करते हैं? ऑप्शन 1 लार्ज कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट पेटल्स, ऑप्शन 2 स्मॉल ग्रीन एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर्स विथ एक्सपोज्ड स्टेमन्स, ऑप्शन 3 ट्यूबुलर शेप विथ नेक्टर गाइड्स, ऑप्शन 4 डेंस क्लस्टरिंग ऑफ शोई पेटल्स. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो यूजुअली छोटे, बेन्स और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं जो ज़्यादा पोलन प्रोड्यूस करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 स्मॉल ग्रीन एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर्स विथ एक्सपोज्ड स्टेमन्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. So the question number 21 is, which of the following is not a typical characteristic of cleistogamous flowers? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन 1 दे रिमेन क्लोज ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ऑप्शन 2 दे एग्जिबिट सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन 3 दे प्रोड्यूस लार्ज शोई पेटल्स, ऑप्शन 4 दे इंश्योर रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 दे प्रोड्यूस लार्ज शोई पेटल्स, बिकॉज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्लोज होते हैं ड्यूरिंग पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एग्जिबिट करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये रिप्रोडक्शन इंश्योर करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. So the question number 22 is, what does the term gametophyte refer to in flowering plants? फ्लावरिंग प्लांट्स में गैमेटोफाइट जो टर्म है वो किसे रेफर करती है? ऑप्शन 1 द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द सीड कोट, ऑप्शन 2 द जनरेशन दैट प्रोड्यूस गैमेट, ऑप्शन 3 द टिश्यू दैट गिव्स राइज टू द फ्रूट, ऑप्शन 4 the dormant stage of the embryo. So the correct answer is option 2 the generation that produce gametes. Question number 23 is, the term syngamy in plant reproduction refers to? syngamy term plants reproduction में किस चीज़ को रेफर करती है? ऑप्शन 1 the production of gametes, ऑप्शन 2 the fusion of male and female gametes, ऑप्शन 3 the growth of the pollen tube, ऑप्शन 4 the process of seed dispersal. So the correct answer is option 2 the fusion of male and female gametes. Now let's move on to question number 24. Question number 24 is, which part of the flower eventually develop into the fruit after fertilization? फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा पार्ट होता है जो फ्रूट में डेवलप होता है? ऑप्शन 1 सेपल, ऑप्शन 2 पेटल्स, ऑप्शन 3 ओवरी, ऑप्शन 4 स्टेमन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 ओवरी. ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप हो जाती है एंड ओव्यूल सीड में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. 5 इज द माइक्रोपाइल इन एन ओव्यूल फंक्शंस टू. ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल होती है उसकी क्या फंक्शन होती है? ऑप्शन ए प्रोड्यूसेस ओव्यूल, ऑप्शन 2 सर्व एज द एंट्री पॉइंट फॉर द पोलन ट्यूब, ऑप्शन 3 डेवलप इनटू द सीड कोट, ऑप्शन 4 अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स. So the correct answer is option 2 serve as an entry point for the pollen tube. माइक्रोपाइल के थ्रू ही पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है एंड फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करता है एंड देन फर्दर आगे की प्रोसेस होती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू 26. क्वेश्चन नंबर 26 इज, which of the following is the characteristic feature of entomophilous insect pollinated flowers? जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? ऑप्शन 1 रिड्यूस ग्रीनिश पेटल, ऑप्शन 2 ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड पेटल, ऑप्शन 3 abundant lightweight pollen only, option 4 exposed stamen and pistil without nectar. So the correct answer is brightly colored and scented petals. Flowers
अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स बनाते ही हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर पॉलिनेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 इज विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोलन. पोलन की प्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स की कौन सी पार्ट रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन 1 कार्पेल, ऑप्शन 2 पेटल, ऑप्शन 3 स्टेमन, ऑप्शन 4 सेपल. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 स्टेमन. पोलन स्टेमन के एंथर में बनता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. So the question number 28 is the self-incompatibility mechanism in flowering plants prevent. Self-incompatibility mechanism जो होती है flowering plants में किसे prevent करती है? Option 1 cross pollination, Option 2 genetic recombination, Option 3 self pollination, Option 4 double fertilization. So the correct answer is Option 3 self pollination. Now let's move on to question number 29. Question number 29 is which layer in the anther is responsible for nourishing developing microspores. एंथर की कौन सी लेयर माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है? एंथर मेनली 4 लेयर वॉल होती है. आउटर टू इनर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम. फर्स्ट की जो 3 लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों एंथर के डेसेंस में हेल्प करती हैं. बट जो लास्ट इनर मोस्ट लेयर है टेपेटम, वो माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं. नाउ लेट्स चेक ऑप्शन. ऑप्शन 1 एपिडर्मिस, ऑप्शन 2 एंडोथीसियम, ऑप्शन 3 टेपेटम, ऑप्शन 4 कनेक्टिव टिश्यू. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 टेपेटम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 इज मेगास्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स रेफर्स टू. फ्लावरिंग प्लांट्स में मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय माइटोसिस, ऑप्शन 2 द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर बाय मियोसिस इन द न्यूसेलस, ऑप्शन 3 द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ऑप्शन 4 द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन बाय माइटोसिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर बाय मियोसिस इन द न्यूसेलस. Now let's move on to question number 31. Question number 31 is which part of the flower is primarily responsible for attracting pollinators. Pollinators को attract करने के लिए flowers का कौन सा part mainly responsible है? Option 1 sepals, Option 2 petals, Option 3 stamen, Option 4 ovary. So the correct answer is Option 2 petals. Now let's move on to question number 32. Question number 32 is which part of the flower is primarily responsible for producing pollen grains. Pollen grain की प्रोडक्शन में फ्लावर की कौन सी पार्ट रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन 1 कार्पेल, ऑप्शन 2 स्टेमन, ऑप्शन 3 पेटल, ऑप्शन 4 सेपल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 स्टेमन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33. Plants bearing separate male and female flowers on the सेम इंडिविजुअल आर टर्म्ड. वैसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेटली फॉर्म्ड होते हैं सेम इंडिविजुअल पे, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 डायोसियस, ऑप्शन 2 मोनोसियस, ऑप्शन 3 हर्माफ्रोडिटिक, ऑप्शन 4 पॉलीगेमस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 मोनोसियस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34. So the question number 34 is which of the following component is the key part of pollen grain. Pollen grain का key component क्या है? Option 1 exine and intine, Option 2 embryo sac and ovule, Option 3 integument and chaliza, Option 4 funicle and placenta. So the correct answer is exine and intine. Exine is made up of sporopollenin जो कि डैमेज और डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन को, एंड इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कौन से एक मैकेनिज्म नहीं है इनमें से? ऑप्शन 1 डबल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 2 सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन 3 एपोमिक्सिस, ऑप्शन 4 क्रॉस पॉलिनेशन. So the correct answer is option 3 apomixis.
Now let's move on to question number 36. Question number 36 is, which mechanism are employed by many flowering plants to prevent self-pollination? Option 1 dichogamy, option 2 hergogamy, option 3 self-incompatibility, option 4 all of the above. डिकोगैमी प्रोसेस में मैचुरेशन स्टेमन और पिस्टिल की डिफरेंट टाइम्स में होती है विद इन द सेम फ्लावर. हर्कोगैमी प्रोसेस में फिजिकल सेपरेशन और अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं स्टेमन और पिस्टिल के. जैसे कुछ फ्लावर्स में स्टिग्मा की पोजीशन जो होती है वो हायर होती है विथ रिस्पेक्ट टू एंथर, विच मेकिंग इट हार्डर फॉर पोलन टू रीच. एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म to prevent self-pollination. So the correct answer of this question is option 4 all of the above. Now let's move on to question number 37. Question number 37 is, which pollination type is characterized by the absence of showy petals and release on wind for pollen transfer? किस टाइप के pollination में फ्लावर्स में पेटल्स शोई नहीं होते हैं एंड वो पोलन ट्रांसफ़र के लिए विंड पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑप्शन 1 जूफिली, ऑप्शन 2 एंटोमोफिली, ऑप्शन 3 एनिमोफिली, ऑप्शन 4 हाइड्रोफिली. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 एनिमोफिली. एंटोमोफिली में इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, हाइड्रोफिली में वाटर के थ्रू और जूफिली में एनिमल्स के थ्रू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38. Question number 38 is, which pollinator is most commonly associated with entomophilous insect pollination in flowering plants? कौन से pollinator entomophilous pollination में common होते हैं? ऑप्शन 1 bats, ऑप्शन 2 bees, ऑप्शन 3 birds, ऑप्शन 4 wind. So the correct answer is option 2 bees. Now let's move on to question number 39. Which structure of the flower develop into the fruit after fertilization? फर्टिलाइजेशन के लिए फ्लावर्स का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप होता है? ऑप्शन 1 स्टेमन, ऑप्शन 2 पेटल, ऑप्शन 3 ओवरी, ऑप्शन 4 सेपल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 ओवरी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 इज, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म फॉर्म होती है उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है? प्लॉइडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम. सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं एंडोस्पर्म्स में? ऑप्शन 1 हैप्लॉइड, ऑप्शन 2 डिप्लॉइड, ऑप्शन 3 ट्रिप्लॉइड, ऑप्शन 4 टेट्राप्लॉइड. हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट, डिप्लॉइड मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉइड मीन्स 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड टेट्राप्लॉइड मीन्स 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम. So the correct answer is option 3 triploid. 3 sets of chromosome होते हैं एंडोस्पर्म में after double fertilization. Now let's move on to question number 41. Question number 41 is, which type of pollination involves transfer of pollen by wind? Option 1 zoophily, option 2 entomophily, option 3 anemophily, option 4 hydrophily. So the correct answer is option 3 anemophily. Now let's move on to question number 42. Question number 42 is, the process by which a microspore develop into a mature pollen grain stumped. माइक्रोस्पोर से मेच्योर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ऑप्शन 1 मेगा गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन 2 माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन 3 पोलन ट्यूब इलोंगेशन, ऑप्शन 4 स्पोरोजेनेसिस. So the correct answer is option 2 microgametogenesis. Now let's move on to question number 43. Question number 43 is, which statement about pollen tube growth is true? पोलन ट्यूब की ग्रोथ के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन 1 पोलन ट्यूब ग्रोथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल्स, ऑप्शन 2 पोलन ट्यूब ग्रो रैंडमली इन द स्टाइल, ऑप्शन 3 पोलन ट्यूब ग्रोथ इज गाइडेड बाय केमिकल सिग्नल सिक्रेटेड बाय द एम्ब्रियो sac, option 4 pollen tube only grow if the flower is self compatible. So the correct answer is option 3 pollen tube growth is guided by chemical signal secreted by the embryo sac. पोलन
ट्यूब की ग्रोथ जो होती है वो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू गाइड होती हैं, एम्ब्रियो सैक उसे रिलीज करता है, वो रैंडमली ग्रो नहीं करती है एंड वो एक्सटर्नल सिग्नल्स पे इंडिपेंडेंट भी नहीं होती है। हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द मैच्योर पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक? पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक में कितने मैच्योर न्यूक्लियाई होते हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 9. So the correct answer is option 3 8. पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक जो कि कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है जिनमें 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, उसके 3 न्यूक्लियस एंड 2 सिनर्जेट सेल के 2 न्यूक्लियस, 1 एग सेल के 1 न्यूक्लियस एंड सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। टोटल 8 न्यूक्लियाई होते हैं। So question number 45 is, in hydrophilous pollination pollen is primarily transferred by? हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन में पोलन किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? ऑप्शन 1 विंड, ऑप्शन 2 इंसेक्ट, ऑप्शन 3 वाटर करंट, ऑप्शन 4 बर्ड. So the correct answer is option 3 water current. Now let's move on to question number 46. Question number 46 is, which structure in the ovule develop into the seed coat after fertilization? ओव्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर सीड कोट में डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? ऑप्शन 1 इंटेगुमेंट, ऑप्शन 2 न्यूसेलस, ऑप्शन 3 फ्यूनिकल्स, ऑप्शन 4 चैलेजा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इंटेगुमेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 इज, a pollen grain containing one vegetative cell and one generative cell is described as? पोलिन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 यूनिसेल्यूलर, ऑप्शन 2 बाइसेल्यूलर, ऑप्शन 3 ट्राइसेल्यूलर, ऑप्शन 4 मल्टीसेल्यूलर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 बाइसेल्यूलर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 इज, which of the following structures secrete chemical attractants, lure peptides to guide the pollen tube in the embryo sac? एम्ब्रियो सैक में कौन सा स्ट्रक्चर केमिकल अट्रैक्टेंट सिक्रीट करता है पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करने के लिए? ऑप्शन 1 एग सेल, ऑप्शन 2 सिनर्जिड सेल, ऑप्शन 3 सेंट्रल सेल, ऑप्शन 4 एंटीपोडल सेल. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 सिनर्जिड सेल्स. Now let's move on to question number 49. Question number 49 is, which hormone is primarily responsible for fruit ripening in many flowering plants? फ्रूट राइपनिंग के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सा हार्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन 1 ऑक्सिन, ऑप्शन 2 साइटोकाइनिन, ऑप्शन 3 इथाइलिन, ऑप्शन 4 जिबरलिन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इथाइलिन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15 and today's last question. Question number 15 is, megagametogenesis is the process by which? megagametogenesis process है जिसके थ्रू ऑप्शन 1 माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन ग्रेन, ऑप्शन 2 द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन 3 2 sperm cells are produced, option 4 the pollen tube emerges from the pollen grain. So the correct answer is option 2 the functional megaspore develop into the embryo sac. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ बेल आइकन को ऑल पे हिट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.